So, good evening, all. Let's begin with today's session. Look at the first question. Which of the following countries are crossed by equator? So, Ecuador, absolutely correct. Kenya, again correct. Indonesia, Maldives, not Mexico. See, Ecuador passes through three continents: Southern America, Africa, and Asia, right? So, select the correct answer using the code given below. Correct answer would be 1, 2, 3, and 4, right? So, D for Delhi would be the correct answer. अब इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछते रहा है, इसलिए हमने इसको पिक किया है. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. इक्वेटर क्रॉसेस थ्रू 13 कंट्रीज अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स. इन साउथ अमेरिका इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. Then in Africa, Congo, Gabon, then Sao Tome and the Principe, Uganda, Somalia, Kenya, Congo Democratic Republic, Maldives, and then यहाँ Indonesia and Kiribati. Right? Now let's move on to the next question. The Monroe Doctrine, which was in news recently, refers to what? It refers to a US foreign policy opposing European colonial intervention in the Americas, means in the Western Hemisphere. See, present में भी आप देख रहे हैं जैसे ये 1823 के आसपास की डॉक्ट्रिन है. अब उस समय यहाँ पे इसका मेन मोटिव था इस डॉक्ट्राइन का कि ये यूरोपियन इंटरवेंशन नहीं चाहते थे किसी भी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, राइट? अब प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स में यहाँ पे, तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज में यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं. पहले तो वेनेजुएला में उन्होंने इंटरफेरेंस किया. देन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को वो ऑक्यूपाई कर लें, मतलब डेनमार्क में वो इंटरवेंशन कर रहे हैं. और तीसरा है पनामा, राइट? तो ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे वो इंटरवेंशन कर रहे हैं. इनफैक्ट कोलंबिया में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन आगे चल के क्रिएट हो सकती है, right? So you can say that it is nothing but the revolution of the Monroe Doctrine. Clear? तो यहाँ पे अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपनी हेजिमनी को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए इस डॉक्ट्राइन को रिविजिट कर रहा है, इसको रीइन्वेंट कर रहा है, राइट? तो इस डॉक्ट्रिन का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था कि यूरोपियन यूनियन will not be interfering where the European Union and the European countries particularly. So the European countries, they will not be interfering in the Western Hemisphere and vice versa, right? America European region में interference नहीं करेगा और Europe Western Hemisphere में कोई भी interference नहीं करेंगे. So I hope you guys understood. Now look at the explanation part. So it is a US policy opposing European colonial intervention in Americas. So Monroe Doctrine 1823, it was a US foreign policy asserting that the Western Hemisphere was off the limits to the new European colonization, and any European interference in Americas would be seen as a threat to the America. Right? So it laid the foundation for the future American interventions in this entire region. So what is happening? How Trump is reviving the Monroe Doctrine after Maduro's arrest. Clear? तो यहाँ पे बात हो रही है मुनरो डॉक्ट्राइन के बारे में, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3, with reference to Supreme Court's ruling in Amlesh Kumar versus State of Bihar 2025, consider the following statements. The first statement says, Supreme Court held that involuntary narco-analysis violates the fundamental right against self-incrimination under Article 20 Clause 3 and the right to personal liberty under Article 21. Absolutely correct. The second statement says, the judgment reaffirmed the principle laid down in Selvi versus State of Karnataka case of 2010 that narco-analysis requires the free and informed consent. Clear? Recently what happened कि पटना हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और पटना हाई कोर्ट ने बेसिकली एक इनवॉलंटरी नार्को एनालिसिस टेस्ट की इजाजत दे दी. अब चाहे नार्को एनालिसिस हो या फिर पॉलीग्राफ हो या फिर ब्रेन मैपिंग हो, इस तरह के सभी टेस्ट जो हैं इसको लेकर के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में यहाँ पे प्रोनाउंस की थी. और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट के बेसिस पे ही ये सभी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं. लेकिन पटना हाई कोर्ट ने क्या किया? पटना हाई कोर्ट ने इस गाइडलाइन के जस्ट ऑपोजिट में जाकर के एक फैसला सुनाया जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कहा कि इस तरह का कोई भी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट के बेसिस पे ही कंडक्ट किया जा सकता है. अदरवाइज इट वुड बी an ultra virus to the constitution. It would be the violation of Article 20 Clause 3 and Article 21. Clear? So which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be both these statements are correct here, both 1 and 2. Now look at the explanation part. So you can see the explanation here. What does the Supreme Court's ruling on narco test means?
And why did the court set aside the Patna High Court order allowing an involuntary narco test? क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो गाइडलाइंस हैं उसको बहुत फर्म मैनर में रीस्टैब्लिश कर दिया है. Right, so the apex court is of the view that the high court's order was in contravention of the guidelines given in the Selvi versus State of Karnataka 2010. Now the question is, what is the narco test? A narco test is a process of investigation during which it is expected that the accused undergoing such a test would express the concealed facts. He is sedated by administering a certain class of substances, generally sodium पेंटाथॉल जो है वो दिया जाता है. तो ये बेसिकली आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बेहद कमजोर कर देता है और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सच ही बोलेंगे. राइट, तो इस तरह का कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो नार्को एनालिसिस हो, चाहे वो पॉलीग्राफ हो या फिर ब्रेन मैपिंग हो, यहाँ पे प्रॉपर एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की जरूरत होगी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 4. With reference to Sabka Bima Sabki Raksha, Amendment of Insurance Laws Bill 2025, consider the following statements. The first statement says, it raises the FDI cap in Indian insurance companies from 74% to 100%. Absolutely correct. Second statement says, the enhanced FDI limit is intended to support the goal of insurance for all by 2047 by improving the insurance penetration and capital availability. Again, correct. This is the part of insurance for all by 2047. Third statement says, it grants disgorgement powers to the IRDAI, means Insurance and Regulatory Development Authority of India, enabling it to recover wrongful gains on the lines of the SEBI's enforcement powers. This is equally correct. So question is, which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be D for Delhi. All these statements are correct here. Right? Why we picked up this question? There is a strong reason. So recently cabinet cleared 100% FDI in insurance, right? So we talked about this bill. So this was the reason we framed this MCQ, right? Now let's move on to the next question. Question number 5. With reference to the district mineral foundations, consider the following statements. The first statement says the DMFs are statutory bodies established by the central government for the mining affected areas in India. No, that's not correct. These bodies are set up by the state governments and not by the central government, right? So that is incorrect. Second statement says the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana was launched in 2015 by the Ministry of Mines to utilize the DMF funds for the welfare of the mining affected areas and the people. This is absolutely correct, right? यहाँ पे भी preferences हैं, जैसे 60 जो परसेंट फंड्स का यूटिलाइजेशन है वो प्रायोरिटी एरियाज में किया जाना है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, राइट. और जो 40% फंड्स हैं उसका एलोकेशन फिर सेकेंडरी एरियाज में किया जाना है. क्लियर? और ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस जो हैं ये बेसिकली स्टैट्यूटरी फंड्स हैं, और ये स्टैट्यूटरी फंड्स कहाँ से आते हैं? ये माइनिंग रॉयल्टी से आते हैं. तो जैसे जो भी रॉयल्टी होती है, पहले जो है 30% था, अब ये 10% हो गया है. तो 2015 के बाद में जो भी माइनिंग लाइसेंसेस मिले हैं उसमें जो टोटल रॉयल्टी है उसका 10% जो है वो यहाँ जाता है मिनरल फाउंडेशंस में. और इसके पहले जो 2015 के पहले जो लाइसेंसेस मिले हुए थे जो माइनिंग कंपनीज को, उस केस में 30% जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस को, राइट. सो दिस इज हाउ दिस फंड इज लाइक स्टैब्लिश्ड. तो स्टैट्यूटरी फंड है, याद रखिएगा. सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज established by the state governments by a notification and not by the central government, right? So the Ministry of Mines launched Pradhan Mantri Khanij Kalyan Yojana in 2015 to channelize the district mineral funds, right? District mineral foundation funds. याद रखिएगा. So at least 60% of the Pradhan Mantri Khanij Kalyan Yojana funds to be utilized for the high priority areas such as drinking water supply, healthcare, education, right? Environmental preservation, and up to 40% of these funds are to be utilized for other priority areas like physical infrastructure, irrigation, energy, and watershed development, etc. Clear? Now let's move on to the next question. So question number 6, with reference to the Enforcement Directorate, consider the following statements. See, it is said that ED has become the new CBI, right? तो ईडी जो है वो प्रेजेंट में वो रोल प्ले कर रही है जो एक दौर में कभी सीबीआई प्ले किया करती थी, राइट. जब सीबीआई का दौर था, कांग्रेस का दौर था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यूपीए का,
उस समय सीबीआई का क्रिटिसिज्म होता था दैट सीबीआई इज नथिंग बट दी कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सिमिलरली प्रेजेंट डेज की बात करें तो ईडी का इस्तेमाल जो है वो जिस मैनर में किया जा रहा है वो आप सभी बेहतर जानते हैं, राइट? सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन with reference to the enforcement directorate, consider the following statements. The first statement says the enforcement directorate functions under the Department of Revenue in the Ministry of Finance. Absolutely correct. Second statement says the ED is responsible for enforcing Prevention of Money Laundering Act 2002. Absolutely correct. The FEMA Act of 99, again correct. The third statement says that ED works under the Ministry of Home Affairs and implements the Fugitive Economic Offenders Act of 2018. See, the half of the statement is incorrect and the other half is correct. There is no doubt that it regulates the Fugitive Economic Offenders Act of 2018 as well. But it doesn't work under the Ministry of Home Affairs. It works under the Department of Revenue, Ministry of Finance. So third statement is incorrect here. The question is, which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be only 1 and 2. So A for Ahmedabad would be the correct answer, right? ED अभी लगातार न्यूज में है. अब आप यहाँ देख सकते हैं ED moves Supreme Court in IPAC case, seeks fair probe in the state obstructions of its rates. Clear? तो वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पर्टिकुलरली ये ईडी के रोल को लेकर के है. यहाँ याद रखिएगा दैट ईडी इन्फोर्सेस द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, द फेमा एक्ट ऑफ 99 एंड द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, राइट? तो तीन उसके लेजिस्लेटिव वेपन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको रेगुलेट करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements regarding India's rice exports in 2025. The first statement says India's rice exports rose by 19.4% in 2025 to 21.55 million metric tons, the second highest on record. Absolutely correct. Second statement says India usually exports more rice than the combined shipment capacity of Thailand, Vietnam, and Pakistan, the next three largest exporters. Absolutely correct. The third statement says India is the world's largest rice importer. No, that's not correct. India is the world's largest rice exporter, not importer. So third statement is incorrect here. Which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be A for Ahmedabad, 1 and 2. So both these statements are correct here, right? Look at the explanation part and why we picked up this question. So recently the rice exports surge to nearly record in 2025 as curbs lifted. So non-basmati rice shipment jumped 25% to 15.15 million tons, while the basmati rice exports increased to 8%, right, which is a record. So I hope you guys understood. Now let's move on to the next question. Question number 8. Pakistan and America recently started joint anti-terrorism military exercise at the National Counter-Terrorism Center in Punjab, Pakistan. What is the name of this exercise? The correct answer is the Inspired Gambit. क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या है? इंस्पायर्ड गैम्बिट. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक्सरसाइज कॉन्डक्ट हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? It was suggested by Sarkaria Commission 1983, right? तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे एक कमीशन बना था. इस कमीशन ने तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए थे. पहला तो यही है कि स्टेट गवर्नर जिस स्टेट में अपॉइंट हो रहे हैं उसके बाहर से होना चाहिए, उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, अगर पॉलिटिक्स में अगर कंप्लीटली ए पॉलिटिकल ना भी हो तो कम से कम एक बिट ऑफ पॉलिटिकल डिटैचमेंट होना जरूरी है. ये बात अलग है कि इस तरह की रिकमेंडेशंस को कभी सरकार ने पूरा नहीं किया. जाने कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह की रिकमेंडेशंस को कभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया. चलिए, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. सो क्वेश्चन इज which of the following countries share a land border with Iran? So Turkmenistan, absolutely correct. Iraq, correct. Qatar, this is not correct. Qatar forms its only land border with Saudi Arabia, right? So Qatar is odd man out. Pakistan, correct. Armenia, correct. In fact, Azerbaijan के साथ में भी border है. So select the correct answer using the code given below. So 1, 2, 4 and 5, right? MEC for Calcutta would be the correct answer, right? In the last session, we discussed that Iran is a theocracy, if you guys remember. Clear? अब क्यों न्यूज में है, वापस से इसको हमने क्यों डिस्कस किया है? Do remember that Israel is on high alert
फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन इन ईरान, राइट। तो ईरान के अंदर एंटी गवर्नमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इन प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इस प्रोटेस्ट के दौरान इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि पहले भी 1979 के पहले तक के Iran was known as a pro-American state, right? It was a pro-American state during the Shah Raza Pahlavi dynasty. तो इसी तरह के प्रोटेस्ट वापस से हो रहे हैं. Now let's see what happens in Iran. तो अब ईरान के पास में क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ईरान यहाँ पे अमेरिकन अलाई को काउंटर करे. तो अमेरिका का क्लोज अलाई यहाँ पे कौन है? दैट इज इजराइल. वो कहते हैं ना कि दुश्मन को वहां मारो जहां पे उसको सबसे ज्यादा पेन हो. तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ईरान इजराइल को हिट कर सकता है. अंडरस्टूड. तो इसलिए इजराइल को हाई अलर्ट पे रखा गया है. क्लियर. सो इट इज अ प्रोमिनेंट कंट्री लोकेटेड इन वेस्ट एशिया. बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है, इट शेयर्स लैंड बॉर्डर विद अर्मेनिया, विद अजरबैजान, विद तुर्कमेनिस्तान, विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. क्लियर. एंड इराक एज वेल, टर्की एज वेल. राइट. चलिए. एंड मैरी टाइम बाउंड्री कहां से? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड कैस्पियन सी. सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. लुक एट दिस वन. एक बार मैप में भी देख लीजिए. Here we have Iran. So Iran forms its border with Iraq, with Turkey. ये देख रहे हैं टर्की के साथ में बॉर्डर है. अर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. एंड ईरान फॉर्म्स अ ह्यूज कोस्टल एरिया विद द पर्शियन गल्फ एंड दिस वन, राइट. यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान. राइट. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सेशंस बेहद पसंद आ रहे होंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाएं वीडियोस में. आप लोग भी कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कंपेनियंस, अपने साथियों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं. तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.